Hello everyone. Yeah, I can already see some of you there, like Suyash, Sunil, Tamanna, Sanskriti. Hello everyone. Can you hear me? Can you hear me? Anshu, Rishi, hello. Can you hear me? Am I audible to you? Hello Kanishka, Jayant. Hello. Just reply me. Am I audible to you? Are you able to hear me? Yes? Okay. Okay, thank you Jayant for saying that. Rishi? Okay. So I have brought a very interesting topic today. Yeah, of course it is related with class 10th, and there is a chapter called How Do Organisms Reproduce? Okay, loud and clear. So that's what I want, so that you understand each and every point that I am going to explain today in this topic. So in this case, in the last time what I had taken was asexual reproduction, and today I am going to take up the sexual reproduction. How does it takes place in the case of flowering plants? Today the topic is really very simple, but at the same time it is interesting, and I hope you will enjoy the session, right? So before starting this session, or before starting with the concepts of this topic, let me remind you once again our app, eCareerPoint app. Most of you have already downloaded it, but still as a reminder, I want to remind you about this eCareerPoint app. Here once you go, you have a section that is free stuff, and in free stuff you will have all the videos present over there of all the lectures that we are taking on this YouTube. You have the video lectures of other subjects as well, whether it's a physics or a chemistry or maths or mental maths, including biology. So here you have all the stuffs there. So if by chance you miss any of our video lecture, you can always go there and see it. So it's good to download it. If you have not done yet, kindly do it. Yes, of course, my coupon is still, you can avail it. It is CC10. So if you want to avail the coupon, you can do it. That's the reason why I don't want to remind you, because you know already about the coupon. So okay, you know about this. I have reminded you once again. So if you have not downloaded, so kindly do it. We all are available over there, and lot many things are there on this app. So yes, Suyash, good morning, good afternoon. Okay, so I'm going to start now with my today's topic. Let's begin the topic. And very simple, here we are going to have many small bits which is related with the sexual reproduction part. So initially we will be studying about the parts of the flower, then we will be seeing about the types of the flowers, and then we are going to study about the process known as pollination, and followed by the fertilization process. And once we come to the fertilization process, our today's topic will be done, which will be again followed by few questions which you always answer in a very good manner. So again, I have framed few questions based on today's topic. So let's begin with the topic, and I'm going to start with the parts of the flower. So here you can see a flower over here, and various parts are present. We are going to study each and every part of this flower. So mainly the flower has the main four parts, that is sepals, petals, stamen and carpel. These are the main four parts of the flower, and they are present in a circular manner in the flower, which is known as whorl. So we are going to study about the four whorls one by one. So it's just an introduction. We are going to study each one of them in detail separately, what they are and what function they perform in the case of flower in the process of reproduction. So let's see. I'm going to take up now each part of the plant. Here we have a flower, and in this case you can see this stalk over here. This stalk which joins the flower to the plant is known as pedicel. So this is the stalk of the flower which joins the flower to the plant body.
This is a pedicel, and just above it you can see this swollen part on which all the other parts of flower is present, and this swollen part is known as receptacle. तो यहाँ दो पार्ट्स हमने पढ़े हैं, एक तो stalk of a flower which is a pedicel which is connecting the flower to the plant body, and the other one is the swollen part which is known as receptacle. Receptacle को हम thalamus भी बोलते हैं. So either you can call it as thalamus or you can call it as receptacle. So right now we have come to the basic part of the flowers. One is the stalk of the flower which is a pedicel, and the second is receptacle which is connected to the pedicel and holds all the other parts of the flower. So here this is present at the base of the flower, and here it is. Now I am coming to the main four whorls of the flower. Whorls is the parts are present in a circular manner in the flower, and the very first whorl is actually calyx. What is a calyx? Now what is calyx and what is sepals? You can see this green leafy part over here, the small green leafy part, green in color, present over here. This is known as sepals, and all the sepals collectively is known as calyx. So what is a calyx? Calyx is the first whorl of a flower, and each unit of this calyx is known as sepals. What are sepals? They are the tiny leafy green part present in the flower. So they are the small leafy part present in the flower. And what is their role? Their main role is to cover the flower. When the flower is in bud condition, the sepals are closed and they protect the inner part of the flower. That means the sepals are protective in nature when the flower is in bud condition. You must have seen the rose flower. All the green parts are present above and all the inner content is present inside. And when the flower blooms, the sepal comes down and all the remaining parts are exposed. So initially when it is in bud condition, they help in protecting the other parts of the flower. So that's the function of sepals, and all the sepals collectively is known as calyx. You need to remember this, right? Okay, hello everyone, somebody has come. Hello, Bollywood movies. So may I know your name please? Okay, I hope Aditya. So here the sepal is done. I am moving to the second whorl of the flower, and here you can see this colored portion which is known as petals. These are the colored parts of the flower. Here in this case, all the petals collectively is known as corolla. So what is the second whorl of the flower? It is the corolla, the second whorl, and each part of the corolla is called as petals. So petals, everyone knows, we use this word in our day-to-day life also, and they are brightly colored. ये बहुत brightly colored होते हैं. क्यों? Because they have to attract the insects. उनको insects को attract करना है. हम एक process पढ़ेंगे pollination थोड़े आगे. So pollination में जब pollens को transfer करना होता है तो उसमें insects का role होता है. So here to attract the insects, these petals are brightly colored. So after seeing the color, the insects comes on the flower and helps in the process of pollination. So here, why the petals are brightly colored? So that they can attract the pollinators. For example, honeybee, butterfly, all those flies which comes on the flower and take the nectar, they attract it with their bright color. So here this is the function of petals. I have told you the function, how do they look, what is the color, and what is the purpose of them. Now these two whorls, calyx and corolla, are the accessory whorls. They are just helping in the process of reproduction. But what are the main parts of reproduction? We are going to study about those two whorls now.
whenever we are talking about function of sepal, already I have said that they protect the flower in the bud condition. When the flower is not bloomed, the sepals help in protecting the inner content of the flower. That's the function of sepal. Okay, so now when we are talking about sexual reproduction, and whenever we are talking about sexual reproduction, here the two gametes will be involved. One will be the male gamete, another would be the female gamete, and there is a process known as fertilization where the fusion of gametes will take place and there will be a formation of zygote. तो जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं वहाँ पे दो गैमेट्स के फॉर्मेशन की बात होगी, एक है मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट, और वो फ्यूज करके फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाएंगे. तो ये एक जनरल प्रोसेस है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है. So in this case now we are going to study the parts where the male gametes are present and where the female gametes are present. तो अब जो दो वर्ड्स पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनमें से एक होगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर और दूसरा होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. तो पहले चलते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर के बाद. यू कैन सी दिस द लॉन्ग स्टॉक. आप ये देख सकते हैं ये एक लॉन्ग स्टॉक है और इसके यहाँ पे ये लोब्ड स्ट्रक्चर है. सो दिस टोटल स्ट्रक्चर विच यू कैन सी इन द डायग्राम इज नोन एज stamen. Here stamen is the male reproductive part of the flower. So here is the stamen, and in the stamen when more than one stamen, you can see many stem over here. So stamen all collectively is known as androecium. तो सारे stamen all together we can give the term which is androecium. तो थर्ड वर्ल किसकी हो गई? जो थर्ड वर्ल हो गई वो है एंड्रोशियम की. एंड्रोशियम एंड ईच यूनिट ऑफ दिस एंड्रोशियम इज नोन एज स्टेमन. ठीक है, तो हम थर्ड पार्ट पे आ गए एंड्रोशियम वर्ल में, जिसमें ईच पार्ट को हम स्टेमन कहते हैं. इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि इन दिस पार्ट the formation of male gamete will take place and somewhere there the male gamete is there. So I'll tell you where in which part of the stamen the male gamete will be present. So now once you have understood the stamen, now I am coming to this portion where what are the parts of the stamen. Here the stamen has three parts. One is filament, another is connective, and यहाँ पे the third is anther, right? Here in this case the stamen has three parts and we are going to study each part. One is filament, another is connective, and the anther, right? Here in this case the long stalk part is known as filament and the above lobed structure is known as anther. So here anther and filament are the most important part of the stamen, and these two parts are connected with the help of connective. So what's the function of connective? It connects the anther to the filament. So let's see how does it look. So here we have the structure of anther and filament. This is a stamen. So this long stalk-like structure is known as filament. This is a stamen, and above this bilobed structure you can see two lobes are there, so it is known as bilobed. This structure is known as anther, and this anther and filament is connected by the connective, right? So above portion, the head portion, which is lobed like structure, is known as anthers, and here the long stalk is known as filament. Now this anther is very important. Why this anther is important? Because when you see inside, when you cut up anther and see inside, आप अंदर देखेंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ pollen sac हैं. Chambers are there known as pollen sac. और इस पोलन सैक के अंदर होंगे पोलन ग्रेन्स. सो दिस इज द प्लेस वेयर द पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड.
सो एंथर्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन एंथर्स के अंदर पोलन ग्रेन्स बनेंगे और इनसाइड द पोलन ग्रेन्स आर द मेल गैमेट्स प्रेजेंट। तो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे जो मेल गैमेट्स हैं वो पोलन ग्रेन्स के अंदर हैं। पोलन ग्रेन्स कहाँ पर है? एंथर के अंदर। बहुत सिंपल है, एंथर के अंदर पोलन सैक है जिनके अंदर पोलन ग्रेन्स होंगे और उन पोलन ग्रेन्स के अंदर हैं मेल गैमेट। और एक चीज़ आप और ध्यान में रखें कि हर एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट्स होते हैं। Why 2 male gametes? We will see its importance in the fertilization topic। तो जब हम fertilization देखेंगे तो वहाँ हम देखेंगे हर एक पोलन ग्रेन से 2 मेल गैमेट्स निकलेंगे और वो 2 मेल गैमेट्स आगे जाके क्या करने वाले हैं ये हम स्टडी करेंगे फर्टिलाइजेशन के टॉपिक पे। तो यहाँ पे हमने देख लिया पोलन ग्रेन्स हैं एंथर के अंदर, और पोलन ग्रेन्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उनके अंदर है मेल गैमेट्स। दैट्स व्हाई द स्टेमन इज कॉल्ड एज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो हमें पार्ट्स याद हो गए, एंथर एंड फिलामेंट connected by the connective. Anther has the pollen sac which contains the pollen which will take part in the fertilization. अब आपने पूछा था ये पिस्टल क्या है, तो पिस्टल इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है अश्विन, आपने यहाँ पिस्टल पूछा है, अभी हम पिस्टल ही पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट। हमारा स्टेमन खत्म हो गया, अब पिस्टल क्या है? पिस्टल इज ऑल्सो नोन एज कार्पल and it is the female reproductive part. Correct Sanskriti, it is the female reproductive part of the flower. तो अभी हम लोग देखेंगे ये है हमारा एक पिस्टल या कार्पल, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि इसके अंदर कहीं ना कहीं फीमेल गैमेट प्रेजेंट है। अब देखते हैं, सबसे पहले ये 4th वर्ल हो गया। हमने पहला पढ़ा था सेपल, फिर हमने पढ़ा पेटल, उसके बाद हमने स्टेमन्स के बारे में पढ़ा, और अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कार्पल या पिस्टल। आप उसको पिस्टल भी बोल सकते हैं, आप उसको कार्पल भी बोल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ कार्पल के 3 पार्ट्स हैं। द अबव टॉप पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा, दिस लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टाइल, एंड दिस लोअर पोर्शन यू कैन सी द swollen पार्ट, दिस इज नोन एज ओवरी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पार्ट्स हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये हैं कार्पल के पार्ट्स। बहुत सारे फ्लावर्स में एक से ज़्यादा कार्पल्स होते हैं, तो जब मोर देन 1 कार्पल्स, ऑल द कार्पल्स collectively is known as gynoecium. Like all the stamens collectively is known as, can I get the answer? All the stamens collectively is known as, I am waiting for the answer. I am waiting for the answer. Will you please tell me the answer? All the stamens collectively is known as. Here, yes, you have to practice the diagram. Androecium, correct Sagar, very correct answer. Another child also has given the answer, Androecium. Similarly, all the pistil or all the carpels collectively is known as gynoecium, right? This is the female reproductive part, and here it consists of 3: stigma, style and ovary. So these are the parts, and one by one we will be studying about this in detail. Okay, so let's see first the stigma part. So here you can see this tip part swollen, this is the stigma, and this stigma is sticky in nature. इसमें stickiness होती है, एक substance होता है stickiness उसमें होती है, and when the pollen falls on it, जब pollens anther से इस पे आके गिरते हैं, then it catches the pollen grain because of the stickiness. तो stigma का function है, it holds the pollen grain. Now where is the pollen grain present? In the anther part of the stamen. वहाँ से pollen grain stigma पे आएंगे, and that process we will see the pollination part.
So when the pollen grains will fall on the stigma, then stigma holds the pollen grain because of the stickiness. That's the role of stigma. So यहाँ पे stigma is present at the tip of the style, and here it is sticky in nature. It has a sticky substance, it is sticky in nature, and it holds the pollen grain, which will later help in the process of fertilization. तो ये स्टिग्मा का फंक्शन हो गया. अभी हम आते हैं स्टाइल पे. दैट्स द नेक्स्ट टॉपिक, स्टाइल. स्टाइल, इफ यू सी हियर, द स्टाइल इज द लॉन्ग दिस ट्यूबुलर पार्ट. सो दिस इज अ कार्पल. ये ऊपर स्टिग्मा हमने पढ़ लिया. अब जो ये लॉन्ग ट्यूबुलर एलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट है, ये है स्टाइल. और स्टाइल के अंदर से जब हम फर्टिलाइजेशन देखेंगे तो एक पोलन ट्यूब उसके थ्रू जाएगी. सो इट विल गिव द प्लेस फॉर द पोलन ट्यूब टू मूव. सो दिस इज द स्टाइल. और इसके नीचे जो स्वोलन पार्ट है, दिस इज ओवरी. नाउ ओवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द ओवरी कंटेन्स द ओव्यूल. तो ओवरी बेस में प्रेजेंट है और इसके अंदर हैं ओव्यूल्स, और वो ओव्यूल्स के अंदर हम एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एम्ब्रियो सैक. उसके अंदर फीमेल गैमेट प्रेजेंट है. इसलिए हम कार्पल को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, बिकॉज इन द ओवरी इनसाइड द ओव्यूल देयर इज फीमेल गैमेट प्रेजेंट. इसलिए यहाँ पे हमने इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला. So this is the fourth whorl of a flower, which is known as gynoecium. तो हमने कैलिक्स पढ़ा, हमने कोरोला पढ़ा, हमने एंड्रोशियम पढ़ा और हमने गाइनोशियम पढ़ा. ठीक है, हमने 4 whorls फ्लावर के पढ़ लिए हैं. और इसमें जो मेन पार्ट्स हैं वो है स्टेमन और कार्पल. दे आर द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट. और जो हमारा पेटल और सेपल हैं वो एसेसरी पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स हैं. दे विल जस्ट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. राइट, अब हम यहाँ पे पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स तो डन हो गया. नाउ वी आर कमिंग टू द टाइप्स ऑफ द फ्लावर्स. फ्लावर्स 2 टाइप के हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर या फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर. नाम से ही पता चल रहा है, bisexual flowers are the one which will have both stamen and carpel. ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स हैं जिसमें दोनों प्रेजेंट होंगे, स्टेमन भी होगा और कार्पल भी होगा. आपने चाइना रोज देखा होगा, हाइबिस्कस, जिसमें दोनों प्रेजेंट हैं, स्टेमन भी है और ये कार्पल भी है. तो इस फ्लावर को हमने क्या बोला, बाइसेक्सुअल फ्लावर. लेकिन कुछ ऐसे भी फ्लावर्स हैं जिनमें सिर्फ या तो स्टेमन होगा या कार्पल पिस्टल. तो अगर इस तरह के कोई फ्लावर्स हैं जिसमें एक सिंगल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, आइदर द स्टेमन इज प्रेजेंट और या इवन मस्टर्ड इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, करेक्ट. और अगर हम ऐसे फ्लावर्स की बात करें जिसमें सिर्फ या तो स्टेमन है या तो सिर्फ पिस्टल है, तो उन फ्लावर्स को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोलेंगे. सो आइदर दे विल हैव अ पिस्टल, पिस्टलेट फ्लावर्स, or they will have a stamen, staminate flowers. So here you need to at least remember the example, at least one. Papaya is the example of unisexual flowers. Okay, यहाँ पे 2 टाइप के flowers भी हमने पढ़ लिए. This you will understand once you remember all the parts of the flower. So now here we are going to move on. Yes, watermelon also. So now here we are moving on to the next part, and here we are talking about pollination. अभी मैंने बार बार pollination word use किया. So let's see. Sajal, good afternoon. Here I am going to see. Kirti, it's fine. Good afternoon to you also. Welcome to this. I have not covered much yet to cover. Tejaswini also is there. Okay, so here what do you mean by pollination? अभी हमने फ्लावर्स के बारे में बात की. लाइक फॉर एग्जाम्पल यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक फ्लावर में सिर्फ स्टेमन है और एक फ्लावर में सिर्फ कार्पल है.
एक जगह मेल गैमेट, दूसरी जगह फीमेल गैमेट. How will the fertilization process will take place? Now there is a process which helps in transferring the pollen grain which contain the male gamete to the stigma of the another flower. और इस process को हम कहते हैं pollination. So what is pollination? It's a transferring of pollen grains. Now where are the pollen grains present? In the anther, where it has to be taken to the female reproductive part. अब female reproductive part के कौन से part में pollen grain जाके stick होगा? That is the stigma. So here, very simple definition, pollination is the process of transferring of pollen grains from the anther to the stigma of the flower. You can see here is the pollen grain, it is released. Now with the help of honeybee or butterfly or water or wind, these pollens are carried to the flower and see where it is sticking on. ये कहाँ stick कर रहे हैं? On the carpel part. What is the tip of the carpel known as? Stigma. So these pollen grains are coming and sticking on the stigma. So yes, the transferring of pollen grains from anther to stigma is known as pollination. Now this pollination, you can see with this how it is taking place. So here this butterflies, honeybees, many insects are helping in the process of pollination. So they are easily, the pollen grain sticks on their body and they are carrying it to the stigma part of the flower. अब देखते हैं types of pollination. अब तक हमने जो देखा है, हमने parts of flower देख लिया, हमने types of flower देखा है unisexual and bisexual. We have studied the definition of pollination. Now we are going to study the two types of pollination. Okay, so here we are going to study about pollen to stigma या pollen grain to stigma, from anther to stigma. That's what I have written. Okay, so here types of pollination, there are two types of pollination. One is self-pollination and the other is क्रॉस पॉलिनेशन. अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? इफ द पोलन ग्रेन्स आर मूविंग फ्रॉम द एंथर ऑफ द सेम फ्लावर टू द कार्पेल ऑफ द सेम फ्लावर, अगर सेम फ्लावर के अंदर ही ट्रांसफर हो रहा है, सो इफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर इज ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, देन वी कॉल इट एज सेल्फ पॉलिनेशन. एंड इफ the pollen grain is transferred from one flower, from the anther of one flower to the stigma of another flower, then we use the term cross pollination. Okay, even bats also helps. Some of them are frugivorous, so when they come and have the fruits and all, the pollen grains stick to their body and they help in the process of pollination. Okay, so I'll come to those pollinating agents. That will be my next topic. So here we have studied the two types of pollination. One is self, allogamy is cross pollination, autogamy is self pollination. So here allogamy is, we are talking about cross pollination, and autogamy when we are talking about self pollination. So here self pollination takes place within the same flower. एक ही फ्लावर है, फॉर एग्जाम्पल बाइसेक्सुअल फ्लावर. आपको पता है बाइसेक्सुअल फ्लावर में कार्पेल भी है और स्टेमन भी है, वहीं के वहीं पॉलिनेशन हो रहा है विद इन द सेम फ्लावर, तो वो हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, राइट. मैं वही सेल्फ पॉलिनेशन ओनली आई एम सेइंग, तेजश्री. एंड द क्रॉस पॉलिनेशन इज व्हेन द टू फ्लावर्स आर देयर, from here the pollen grains are transferring to another flower, then we call it as cross pollination. So here we have studied the two types of pollination, right. Now I am coming to the pollinating agents. बहुत सारे हैं जो pollinating agents के लिए बोल रहे हैं. So that is my next topic.
ये जो पॉलिनेशन हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, हाउ इट इज टेकिंग प्लेस? इट इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं जो पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर में हेल्प करते हैं. अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल. सो पॉलिनेशन इज नेसेसरी फॉर ट्रांसफरिंग द पोलन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर. अब पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से एजेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं? उनमें से एक है एबायोटिक एजेंट्स and the other is biotic agents. Abiotic, no living organism is involved, and here it is wind and water. Abiotic agents में wind और water आता है. Biotic agents में आते हैं all the animals. हम एक एक करके देखते हैं शॉर्ट में. Wind in most of the cases like corn, maize या wheat में, the pollens are carried with the help of wind. So in the wind pollinated plants, the pollen grains are very light, बहुत light होते हैं, and it can be easily transferred. Now here the wind is responsible for transferring of pollen grains. आपने मेज में देखा होगा बहुत लॉन्ग लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, आपने देखा है? So उसमें वो जो है लॉन्ग फाइबर्स जो हम फेंक देते हैं खाने के वक्त, दे आर द स्टिग्मा इन द स्टाइल. वो फटाफट से पोलन ग्रेन्स को लेते हैं and that helps in the process of fertilization. So wind is responsible in some cases. If I am talking about water, it is mainly seen in the aquatic plants. जो plants पानी में रहते हैं, we have seen them here. Zoophily animals, right? Zoophily will come under this animals. So here, right, hydrophily is water and hemophily is wind. So here the water, the pollen grains are released into the water, और water current उस pollen grains को कार्पेल के पास लेके जाते हैं, and that pollen grains then sticks to the stigma of the carpel and helps in the process of pollination. बहुत कम plants हैं जो water से pollinate होते हैं, but still water is a pollinating agent. Now I am coming to this biotic agents जिसमें animals are responsible, zoophily, all the animals are responsible in this case. Like most common is the insects, whether it is honey bee or a butterfly, सबसे common तो है ही. उसके अलावा कुछ rodents हैं, squirrels हैं, bats हैं, बहुत सारे animals हैं जो pollen को transfer करते हैं. Somewhere the pollen sticks to their body, और जब वो move करते हैं एक से दूसरी जगह, the pollens are carried along with their body and the pollens are transferred. तो इस तरह से animals are playing role in the transferring of pollen grains, right? I think it's clear now how the transfer of pollen grain is taking place. यहाँ पे yes, air भी करते हैं, air is wind. I have already said air also carries the pollen grain, wind है वो, ठीक है. अब हम पोलिनेटिंग एजेंट्स भी पढ़ लिया, पॉलिनेशन भी पढ़ लिया, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा फीचर है वो है फर्टिलाइजेशन. इसके लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मेल गैमेट फॉर्मेशन, pollination, but ultimately the main event that is going to take place is fertilization. तो अब हम fertilization पे आते हैं. What do you mean by fertilization? It is the process where the fusion of male and female gamete will take place. So that is the fertilization. अब हम ये देखने वाले हैं कि प्लांट में ये fertilization की process कैसे हो रही है. Now where does the pollen grain reach into the carpel? Pollen grains आए and they stick onto the stigma. Stigma पे वो चिपक गए. So here you can see the pollen grains are sticking on the stigma. यहाँ पे pollen grains will germinate and you can see a tubular structure forming. इसको हम pollen tube कहते हैं. So here this pollen tube is formed from the pollen grain. और ये ट्यूब क्यों बन रही है? बिकॉज इट विल कैरी द मेल गैमेट्स. फीमेल गैमेट्स कहाँ हैं? इनसाइड द ओव्यूल.
ये पोलन ट्यूब क्यों बन रही है? क्योंकि इट विल कैरी द मेल गैमेट्स नियर टू द फीमेल गैमेट। जो एग सेल है वो ओव्यूल के अंदर है, जो मेल गैमेट है वो पोलन ग्रेन के अंदर थे। नाउ दिस पोलन ट्यूब विल ग्रो एंड इट विल कैरी द मेल गैमेट्स अलोंग विद इट। तो यहाँ पे पॉलिनेशन के बाद हो रहा है फर्टिलाइजेशन, एंड वंस द पोलन रीचेस टू द स्टिग्मा there is a development of pollen tube and pollen tube grows and reaches near to the ovary here and it reaches near to the ovules present in the ovary. Here many pollen grains might be there and many ovules are there, but here one pollen grain will go and fuse with only one female gamete. That's what I have taken one example. At a time many pollen grains can germinate because each flower may have many ovules also. So I am just taking one ovule as an example for the understanding of the concept. ठीक है, पोलन ट्यूब बन गई, कहाँ पहुँच गई? ओव्यूल के पास। अब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को समझना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बिकॉज द नेम्स आर देयर, बट वी विल गो लिटिल स्लोली टू अंडरस्टैंड। पोलन ट्यूब इज ग्रोइंग नियर टू दिस ओव्यूल, ये है ओव्यूल। इनसाइड द ओव्यूल देयर इज अ स्ट्रक्चर विच इज नोन एज एम्ब्रियो सैक। सो दिस इज एन एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक किसके अंदर है? ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल का बहुत डिटेल स्ट्रक्चर है हायर क्लास में, सो वी विल नॉट गो इन दैट डिटेल। उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, इंटेगुमेंट, न्यूसिलस, बहुत सारा है, बट राइट नाउ आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ओव्यूल विच इज नोन एज एम्ब्रियो सैक। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर है फीमेल गैमेट विच इज नोन एज एग सेल। सो हियर दिस इज द फीमेल गैमेट, और इस फीमेल गैमेट के पास आप दो सेल्स देख सकते हैं, इनको कहते हैं सिनर्जिड्स। एक फीमेल गैमेट और दो सिनर्जिड्स। इनके रोल्स हम पढ़ेंगे, इसलिए मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रही हूं यहां पर। सो वन इज द फीमेल गैमेट नोन एज एग सेल, द अदर टू इज सिनर्जिड्स। अब थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, यू कैन सी दिस टू स्ट्रक्चर्स, they are the two polar nuclei. They are, here you can see the polar nuclei and they are 2 in number. और लास्ट में आप देख रहे हैं 3 और सेल्स हैं, और इन सेल्स को हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। तो टोटल कितने पार्ट्स हैं हम एम्ब्रियो सैक में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एग सेल जो कि है हमारा फीमेल गैमेट, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में रोल करेगा प्ले। उसके पास दो सिनर्जिड्स हैं। सिनर्जिड्स का रोल मैं बताऊंगी जब मैं प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एक्सप्लेन करूंगी। आप देख सकते हैं दो पोलर न्यूक्लियाई नियर टू द सेंटर, और एकदम एक्सट्रीम एंड में 3 सेल्स हैं जिनको हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। राइट, सिनर्जिड्स, एग सेल, पोलर न्यूक्लियाई एंड एंटीपोडल सेल्स। ये क्यों पढ़ाया मैंने? क्योंकि अभी हम जब प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन देखेंगे तो वहाँ 2 तरह के फ्यूजन्स होने वाले हैं, जिसको हम एक एक करके समझेंगे, और उन फ्यूजन्स में ये सारे सेल्स के नाम आने वाले हैं। सो वी शुड नो अबाउट दिस। हियर दिस इज द एम्ब्रियो सैक, नॉट द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो तो अभी बनेगा, इट्स नॉट एन एम्ब्रियो। दिस होल स्ट्रक्चर is termed as embryo sac, जिसके अंदर फीमेल गैमेट है। एम्ब्रियो तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनने वाला है, राइट। सो नाउ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन विल स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे जो एग सेल हैं, हियर इफ यू सी हियर द पोलन ट्यूब इज हियर, इट एंटर्स इनटू द ओव्यूल, you can see a cell released। अब वो सेल जाके ये जो फीमेल एग सेल है इसको फ्यूज कर देंगे।
इन द पोलन ट्यूब देर आर 2 मेल गैमेट्स. ये ध्यान रखिए, मैंने जब पोलन ग्रेन्स बताया था तब भी ये बताया था. ईच पोलन ग्रेन हैज 2 मेल गैमेट्स, और वो 2 मेल गैमेट्स पोलन ट्यूब से रीच होके ओव्यूल के पास आ गए. नाउ दे विल एंटर इनटू वन ऑफ द सिनर्जिड्स. सिनर्जिड्स मैंने बताया है 2 सेल हैं जो एग सेल के पास है, तो उनमें से एक सिनर्जिड्स गाइड करेंगे मेल गैमेट को. एंड हियर यू कैन सी सिनर्जिड एंड द मेल गैमेट कमिंग हियर एंड फ्यूजिंग विद द फीमेल गैमेट. तो एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज हो रहा है, ये पहला फ्यूजन है. सो हियर द एग सेल इज फ्यूजिंग विद द मेल गैमेट एंड दिस फ्यूजन इज नोन एज सिनगैमी. हम फर्टिलाइजेशन की जगह यहाँ पे हम सिनगैमी भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पे सिनगैमी हो रहा है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. जब मेल और फीमेल गैमेट बनता है तो जो पहला सेल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज zygote. The very first cell formed due to the fusion of male and female gamete and it is known as zygote. और आगे जाके embryo sac is present in the ovule. zygote आगे जाके डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में, और आगे जाके वो एम्ब्रियो ग्रो हो जाएगा एक और न्यू प्लांट में. तो यहाँ पे एम्ब्रियो किससे बन रहा है? zygote से. zygote कैसे बना? बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. ये एक फ्यूजन हुआ है बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमेट. व्हाट अबाउट द सेकेंड मेल गैमेट? जो सेकेंड मेल गैमेट है वो सेंटर में जाके जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं उनके साथ वो फ्यूज हो जाएगा. राइट, इट विल गो एंड फ्यूज विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट नियर टू द सेल. अब यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 मेल गैमेट का न्यूक्लियस. सो हियर सिंस 3 न्यूक्लियाई आर फ्यूजिंग, द फ्यूजन इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन. यहाँ पे 3 फ्यूजन हो रहे हैं. अब ये कौन सा फ्यूजन है, इसकी जरूरत क्या है? वाई देयर इज अनदर फ्यूजन व्हेन ऑलरेडी द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड? ये जो ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, दिस इज टेकिंग प्लेस एंड व्हाट इज फॉर्म्ड इज एंडोस्पर्म. जब तीनों फ्यूज हो गए तो जो पहला न्यूक्लियस बना उसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं. आगे जाके वो बनाएगा एंडोस्पर्म. What is this endosperm and why we are studying about this endosperm? हम इस एंडोस्पर्म के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि it will provide the nourishment to the developing embryo. जो एम्ब्रियो ग्रो हो रहा है उसको न्यूट्रिशन चाहिए और उसके लिए एंडोस्पर्म का बनना जरूरी है. So let's see once again this here. We are going to see it again. You can see a male gamete released, fusing with the female gamete, zygote बन गया. और एक दूसरा जो male gamete है, now it will come and fuse with these 2 polar nuclei और यहाँ triple fusion हो गया. टोटल कितने फ्यूजन्स हो रहे हैं? एक मेल और फीमेल गैमेट में और एक बिटवीन मेल गैमेट एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई. क्योंकि यहाँ पे 2 फ्यूजन हो रहे हैं, दैट्स वाई इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन. इस प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 फ्यूजन हो रहे हैं. वन इज सिनगैमी एंड अनदर इज ट्रिपल फ्यूजन. क्योंकि 2 फ्यूजन्स हो रहे हैं, triple fusion and syngamy. Therefore we say in the case of flowering plants the double fertilization takes place. तो यहाँ पे क्योंकि 2 फ्यूजन्स हैं तो डबल फर्टिलाइजेशन, एक फ्यूजन में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा और एक में एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा. सो हियर इन दिस केस फ्यूजन्स जॉइनिंग इज नोन एज फ्यूजन्स. अब यहाँ पे क्या बनने वाला है किससे? जो ओव्यूल है, द ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू सीड्स. हम जो सीड्स
फ्रूट्स में देखते हैं, खाते हैं. द सीड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ओव्यूल. जो ओव्यूल था, नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू सीड. और जो हम फ्रूट्स खाते हैं, दैट इज नथिंग बट द ओवरी पार्ट. So after fertilization, the ovary will modify or change into the fruit. Ovule will change into the seed, and inside the seed is present the embryo. अब जो seed के parts हैं वो देख लेते हैं short में. जो seeds हैं, the outer covering is known as seed coat. जो बाहर की जो covering है उसको हम seed coat बोलते हैं. और जब हम सीड को खोलते हैं, आपने कभी राजमा या चने को खोला होगा, तो उसके अंदर जो पार्ट्स, जो वाइट कलर का पोर्शन अलग होके बाहर आता है, इट इज नोन एज कॉटलीडन. कॉटलीडन नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है. अब इसमें एम्ब्रियो कहाँ है? दिस पोर्शन यू कैन सी हियर, दिस पोर्शन कंसिस्ट ऑफ रेडिकल एंड प्लीम्यूल. जो नीचे का पार्ट है वो है रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस का. ऊपर का पार्ट है उसको हम कहते हैं प्लीम्यूल. आगे जाके ये प्लीम्यूल शूट सिस्टम बनाएंगे, यानी कि स्टेम, लीव्स और अदर पार्ट्स ऑफ द शूट सिस्टम. रेडिकल आगे जाके रूट्स बनाने वाले हैं. सो व्हेन वी ग्रो द सीड्स, द सीड जर्मिनेट्स. रेडिकल विल फॉर्म द रूट पार्ट, plumule will form the shoot part, cotyledons will provide the nutrition to this growing embryo, and seed coat is forming the protective layer. तो ये seeds के parts हो गए. Now we have already finished all the parts. एक बार revise कर लेते हैं इसके through. Pollination हुआ, pollen tube is growing, pollen tube is coming to the ovules. ovules में आने के बाद आप देख सकते हैं 2 मेल गैमेट आए. 2 मेल गैमेट में ये एक मेल गैमेट ने एग सेल को फ्यूज किया, क्या बन गया? जाइगोट. दूसरे ने एंडोस्पर्म बनाया. उसके बाद जो ये ओव्यूल है, इट इज कन्वर्टिंग इनटू सीड्स, एंड हियर द ओवरी इज कन्वर्टिंग इनटू फ्रूट्स. एक बार और देख लेते हैं. पोलन ग्रेन्स, pollination, the growth of the pollen tube is taking place. The pollen tube is reaching to the ovule. The 2 male gametes are now coming. Now this is reaching inside the ovule. ये 2 male gametes गए, फ्यूज किया, 2 फ्यूजन हो रहे हैं. एक में जाइगोट बन रहा है, एक में एंडोस्पर्म डेवलप हो रहा है. The ovule is converting into seeds and the whole ovary is converting into fruits. तो इससे पूरी प्रोसेस समराइज हो गई. यहाँ पे फ्यूजन नेम, वन इज ट्रिपल फ्यूजन, अनदर इज सिनगैमी. ट्रिपल फ्यूजन बिटवीन 1 मेल गैमेट एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई, उसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं. और जहाँ पे मेल गैमेट फ्यूज होते हैं एग सेल से, वहाँ हम कहते हैं सिनगैमी. तो ये 2 फ्यूजन्स हो गए, और क्योंकि 2 फ्यूजन्स हो रहे हैं, हम इस प्रोसेस को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. अब आप लोग बहुत देर से नॉट क्लियर, इट्स नॉट क्लियर येट. सी, पोलन ट्यूब हैज 2 मेल गैमेट्स. ठीक है, 2 मेल गैमेट है, वो ओव्यूल्स के अंदर आए, एम्ब्रियो सैक के अंदर आए. एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज करेगा, वो एक फ्यूजन हो गया जहाँ पे जाइगोट बन रहा है, दैट इज सिनगैमी. और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज कर रहा है 2 पोलर न्यूक्लियाई से, और उसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन. तो कितने फ्यूजन हुए? 2 फ्यूजन, एक सिनगैमी और एक ट्रिपल फ्यूजन. ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन. बहुत देर से आप वेट कर रहे हैं कि मैम क्वेश्चंस पूछेंगी. सो आई हैव कम टू दैट सेशन जहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है. पहला फर्स्ट क्वेश्चन, लेट मी स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन. हियर इज द क्वेश्चन. जस्ट सी द क्वेश्चन. Germination means when the seeds, the embryo comes out of the seeds and grow.
that is known as germination. The transfer of pollen from anther to stigma is called as. Okay, thank you. If it is clear, very good. Now I hope you all know the answer for this. इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है. I can see everyone is giving the correct answer. The answer is, let's see, everyone has given the answer? Yes, the answer is pollination. So here it is the pollination which helps in transferring of pollen grains from the anther to stigma. Correct, very correct. Everyone has given the correct answer. Moving on to the second. अब हम second question पे आ गए हैं. So let's see what is the second question. Here the second question goes like this. Here the male reproductive part of a flower, the stamens, are collectively known as. What it is collectively known as? Answer बताइए. I'm just waiting for the answer. Let's see who is going to give the answer first. Okay, Bollywood movies has given the first answer, correct answer. Jayant, Rishi, Tejshri, Kirti, everyone has given the correct answer. Here again the answer is A, which is androecium. Gynoecium क्या है? What is gynoecium? Here what is collectively known as gynoecium? इसका आंसर बता सकते हैं आप? Here tell me the answer. What is collectively known as gynoecium? Gynoecium का single unit को क्या बोलते हैं? What is called as the single unit of gynoecium? बताइए फटाफट. Yes, female reproductive part, उसका नाम क्या है? What is the name of that single unit of gynoecium? It's not a part of this quiz, but I'm just asking if you remember it. No, not stigma. What is a complete female reproductive part called as? Pistil or carpel. ठीक है, pistil या carpel. Okay, now I'm moving on to the third question. The answer is androecium, correct. Now I'm moving on to the third question. अब मैं third question पे आ रही हूँ. Let's see the third question. Here, yes, pistil and carpel you have understood, I know now. Let's see the third one. Seed is the modification of, Rishi. Yes, what is the seed is the modification of? I'm waiting for the answer. सोच के बोलिए, यहाँ बहुत confusion है. यहाँ पे दो आंसर हो सकता है मुझे मिले. I can see that. Fruit और seed में confuse नहीं होना. You have to see seed forms from and fruit forms from. Decide करिए fruit किससे बन रहा है और seed किससे बन रहा है. Here I am asking the seed, not the fruit. Not the fruit. What will be the answer here? The answer is D. Ovule will become the seed and ovary will become the fruit. तो यहाँ पे ये याद रखना है, ये बहुत confused होते हैं अक्सर. यहाँ पे ovule gets modified into seeds and ovary gets modified into fruits. So please don't get confused in the future. ये ध्यान रखें, जो ovary है वो fruit बनाएगी और जो seed है वो ovule से बन रहे हैं. So here the answer is ovule. ठीक है, so please don't get confused between the two. Ovule अंदर है तो seed और बाहर वाला पोर्शन ओवरी है तो फ्रूट. आप जब खाते हैं तो आप फ्रूट खाते हैं, सीड अंदर होते हैं, तो उससे याद रखें. सो हियर द आंसर इज डी, ओव्यूल. ओव्यूल गेट्स मॉडिफाइड इनटू सीड्स. अब हम आते हैं लास्ट यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन पे. लेट्स सी व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग विल फर्स्ट रिसीव्स द पोलन ग्रेन? इनमें से कौन सा पार्ट है जो पोलन ग्रेन को सबसे पहले रिसीव करेगा पॉलिनेशन के प्रोसेस में? इसमें कौन सा पोर्शन फ्लावर के रिसीव करेगा पोलन को एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन? यस, आई एम वेटिंग. यस, हियर नो कंफ्यूजन इन द आंसर. You are most, yes, it's clear now.
द कार्पल हैज 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और यहाँ पे जब पोलन फॉल करेगा तो सबसे पहले वो आएगा स्टिग्मा पे। स्टिग्मा हैज द स्टिकी सब्सटेंस टू होल्ड द पोलन ग्रेन। यहाँ बहुत फटाफट से आंसर आ गए, एंड हियर द आंसर इज स्टिग्मा। वेरी करेक्ट आंसर। नाउ आई एम मूविंग ऑन to the fifth question. So let's see the fifth question, and the question goes like this. ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, अभी का। फटाफट से इसको देखिए। The anther contains, what does the anther contains? Anther contains, yes जयंत, कीर्ति ने फटाफट से आंसर दे दिया है। Here सब, संगीता, जयंत, everyone is giving the correct answer here. The anther contains the pollen grain, and inside the pollen grain are present the male gametes. Very correct answer. Everyone has given the answer here. Very correct. Anthers contain the pollen grains. So here the answer goes like this. It's the pollen grains. So here I hope you have understood the topics that I have taught you in the today's session. आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है, जो भी बोर्ड्स के लिए अपीयर कर रहे हैं, क्लास 10 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, इवन इन द NTSE ऑल्सो। सो प्लीज, यस संस्कृति, यू आर गिविंग ऑल द आंसर्स, आई कैन सी most of the time you all are giving all the answers. Everyone is active, everyone is given the correct answer. Thank you. If the topic is clear, okay, thank you very much for this. Now here I have come to the end of the session. I hope you have understood all the topics that I have taught related to the sexual reproduction in flowering plants. I will come up with few more topics the upcoming week. Thank you and have a nice day. Take care of yourself. Goodbye.